अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं केमिस्ट्री के पेपर के लॉन्ग क्वेश्चंस को अपलोड कर चुका हूं मैं। अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर स्टूडेंट्स सारा साल भी इन क्वेश्चंस को सिर्फ पूरी बुक छोड़ के सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार कर लें तो वो अच्छे नंबर्स ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। या तो आप बुक निकाल लें और निशान लगाते जाएं अगर आपको क्वेश्चन की समझ आती है। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, उनकी समझ नहीं आ पाती तो आप साथ पेंसिल रख लें, कापी रख लें, उस पर नोट कर लें। पहला क्वेश्चन है जी, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मोल एंड एवोगैड्रोज नंबर विद एग्जांपल। फिर है डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड हाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज आइडेंटिफाइड। व्हाट आर आइसोटोप्स एंड व्हाई द आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर नंबर 4, द एटॉमिक मासेस मे बी in fraction, why? Number 5, differentiate between actual yield and theoretical yield. Number 6, give the reasons to explain the actual yield is less than the theoretical yield. Number 7, define molecular ion, how it is formed. Number 8, define yield, how is efficiency of a reaction is measured, और percentage yield भी हम इसको कहते हैं. Number 9, what is stoichiometry, write its assumptions. Magnesium as an atom is twice heavier than that of carbon atom, justify that statement. Calculate the gram atom in 0.1 gram of sodium. Differentiate between empirical and molecular formula with examples. Nitrogen and carbon monoxide have the same number of electrons, protons and neutrons, explain it. No individual neon atom in the sample of element has a mass of 20.18 20.18 AMU/Y. What is the justification of two strong peaks in the mass spectrum of bromine, while for iodine only one peak at 127 AMU as indicated? ये थे चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पर चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। Differentiate between adsorption chromatography and paper chromatography. Why is there a need to crystallize the crude product? What is RF value? Why it has no units? Define crystallization. Write the name of various steps. What is the differentiate between qualitative and quantitative analysis? Write 4 properties of good solvent. How crystals are dried by the reliable method. How undesirable colors are removed from the crystals. Define distribution law, how it is helpful in solvent extraction. Define sublimation with any 2 examples. What is solvent extraction, give its examples and technique. Define chromatography, give its 2 uses and describe its importance. Write uses of paper chromatography. तो ये थे चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 पर चलते हैं। कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड वाइस वर्सा। यानी कि आपने डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो लिखें। डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो, व्हाट इज इट्स वैल्यू। एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इन SI यूनिट्स। व्हाई डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट जीरो temperature of gases. Define Avogadro's law of gases. Differentiate between diffusion and effusion. What are faulty points in kinetic molecular theory of gases? State Dalton's law of partial pressure. Write its 2 applications. Define critical temperature and critical pressure by giving an example of each. State under what conditions the real gases deviate from the ideal behavior. What is plasma, how it is formed. Write 4 applications of uses of plasma. Lighter gases diffuse more rapidly than heavier gases. Why water vapors do not behave ideally at 273 Kelvin. Sulfur dioxide is non-ideal at 273 Kelvin but behaves like an ideal gas at 327 degrees Celsius. Justify. इनके 273 केल्विन पर जो है नॉन आइडियल है, जबकि 327 डिग्री सेल्सियस पर ये आइडियल बिहेव कर रही है। जस्टिफाई करें इसको। वाटर आइसोथर्म्स, what happens to the position of isotherms
when they are plotted at high temperature for the particular gas. Okay, next है, do you think that the volume of any quantity of gas becomes zero at minus 273.16 degree Celsius? Is it not against the law of conservation of mass? How do you deduce the idea of absolute zero from this information? बहुत ही conceptual question है. तो ये थे चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस. ठीक है, नेक्स्ट इसकी न्यूमेरिकल्स हैं इसके अंदर, तो वो भी पॉइंट आउट कर लें. एग्जांपल नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है. और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21 एंड 23. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं. वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर? Ice has less density than liquids. Why? Liquid water. Why boiling point of water varies from sea level to higher level? Define molar heat of fusion with example. Evaporation causes cooling. Justify. Define anisotropy and polymorphism. Isomerism. 3 definitions है. Earthenware vessels keep water cool. Explain. The electrical conductivity of metals decreases with the increase in temperature. Why? Define the lattice energy. Give examples. Explain why ionic crystals are brittle. Define transition temperature and give 2 examples. What are crystallographic elements? Explain with diagram. Why ionic solids do not conduct electricity? Diamond is hard and an electrical insulator. Why? Define hydrogen bonding. Why H2O is liquid at room temperature and H2S is a gas? Define unit cell. Define crystallographic elements. Differentiate between isomorphism and polymorphism with suitable examples. Next चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ. Why the nature of cathode rays is independent of nature of gas used in discharge tube? How it was inferred that cathode rays are material particles? What is nuclear reaction? Write equation for the production of neutron. What happens when a neutron is decayed? Or give products of form due to the decay of neutrons. Write defects in Rutherford's atomic model. Calculate the radius of nth orbit of hydrogen. Describe Siemens and Stokes effect. State Moseley's law. Give its mathematical expression. Differentiate between atomic emission spectrum and atomic absorption spectrum. How does Bohr introduce the Planck's quantum theory in his model? Give 2 postulates. Differentiate between line spectrum and continuous spectrum. What is de Broglie's equation and Heisenberg's uncertainty principle? What is N plus L rule? Define Pauli's exclusion principle with example. Differentiate between frequency and wavelength. Frequency and wavelength में difference. Define Hund's rule. Give an example. Define electronic configuration of chromium, carbon, ferric and bromine. इनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें. तो ये थे आपके 5 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस. नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट 5 चैप्टर्स जो हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चंस बताए जाएंगे. शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़.